You can start. Okay, Assalamu alaikum. My name is Yasmin Altaf, aka Journals by Brownie, and as you all know, that today's session is continuation of our last day's webinar that was conducted by Ariba Mariam Mahmood, and I really appreciate the way she has enthusiastically delivered her part, and I think we should get started with our today's session. And can you guys see my screen? Yes, we can see your screen. Okay, Jazakallah. So I'm going to enlighten you guys with a systematic review and meta-analysis, and let's get started. Okay, so what is systematic review? Systematic review is a single document. It is a document that we formulate with the help of the individual studies, as you can see in the slide, that these individual studies are similar to our research topic, and these are similar but somehow different. So you might be guessing, you might be thinking that why she's saying that it is similar but somehow different. So मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान में and more particularly in Fatima Jinnah Medical University, there's a group of students and they want to investigate that. They want to know the effect of beta blockers on the reduction of migraine headaches in a specified population of 40-year-old males, maybe. Okay, so do you think that this question popped up in the mind of just this group of students in Pakistan, or in particularly Fatima Jinnah Medical University? No, there's a whole world out there, and there might be a group of students in different corners of the world. For example, in USA, in United Kingdom, or in Portugal, or in Argentina, or any other country. Okay, so the same person can pop up in the minds of all of those students, and they might also want to, they might also have the theory of how beta blockers is, affecting the migraine headaches. So in the formulation of systematic review, what we do is we take the relevant researches that have been done in the past. हमारे जो timeline वाली है, उसके अंदर लोगों ने जो इस topic से related research की हुई है, we collect all of that research, we identify, we select those researches, and we make all of those researches to go through some filters, to go through some checkpoints, to go through some purification process that we call as rigorous scientific methods. That is the eligibility criteria, okay, to formulate our systematic review. So I guess I have cleared the concept of what a systematic review is, and if you see in the slide that this systematic review is, on the ocean. If you consider the literature review as an ocean, okay, or as a river, then systematic review is an island on that ocean. So it makes a chunk of literature review. And why am I saying it? Because literature review and systematic review, you might, lots of students, they confuse both of these terms. So what happens here is systematic review is a kind of literature review done in a systematic way. That's, I guess, that's the most simplified form of explaining what a systematic review is. Okay, so I don't know. Okay. So here I would like to clear this confusion of what is difference between literature review and systematic review. Okay, because both of these look similar somehow. Now, narrative review, when we are doing our literature review, what we do is we take broad number of studies. We take 2 diverse studies, and we basically don't, focus on the systematic way or the specific way. We don't specify ourselves while we are, working on a literature review. Whereas in the case of systematic review, we specify our whole process. Okay, we become so specific with the topic that हमें बीटा ब्लॉकर्स का इफेक्ट ही पता करना है माइग्रेन हेडेक्स की रिडक्शन में. We are not talking about how Verapamil is doing it, or how calcium channel blockers, that's the same drug I mean, or how ergotamine, or how the others maybe other. I'm not doing pharmacology here. So the next thing I would like to differentiate here is
what are the sources or the selection criteria or the evaluation criteria that we use in the literature review. Just like I just explained कि जब हम literature review कर रहे होते हैं तो उसके अंदर biasness आ जाती है, काफी ज्यादा biasness आ जाती है, and it is the whole process is not specified, whereas in case of systematic review the whole process become, you know, it goes through filters, it goes through a scientific method, a proper criteria हम follow करते हैं अपने सोर्सेज सिलेक्ट करने में, और इसके अलावा जो सारा हमने अपनी स्टडीज को इवेल्युएट करना होता है, उसको एनालिसिस करना होता है, उसको असेस करना होता है. Okay, so next thing is the literature review is always you know, and most of the times it is qualitative, whereas systematic review can be both qualitative or it can be quantitative as well. And I will explain later that what is the quantitative chunk of the systematic review. You're all going to know it. And then we talk about the inference, that what is the inference of literature review and the systematic review. Now, the systematic review always and always, it is evidence based. इसमें हमें evidences मिलते हैं. हम लोग जो studies को you know filter करते हैं, जब हम उनको go through करते हैं, तो we look for the evidences. We are not randomly going through the studies. Okay, as in case of literature review, what we do is we kind of doing it haphazardly. हम उसको randomly कर रहे होते हैं, kind of जो हम जैसे randomized control studies हमारी होती है, ठीक है, उसका हम लोग उसको randomly लेके चल रहे होते हैं. Whereas in case of systematic review, the whole procedure is very much, you know, it is systematic, proper हम criteria follow कर रहे हैं. So I guess now systematic review, उसकी definition and it is difference between the literature review and systematic review clear to all of you. Now इतना हमने systematic review को सर पे क्यों चढ़ा के रखा है? Now see this slide, that a systematic review along with meta-analysis, it makes the summit of the evidence hierarchy. ये जो पूरा pyramid आपको नजर आ रहा है, इसके टॉप पे systematic review और meta analysis है. कल जो सारा रिबन एक्सप्लेन किया है, that was primary study. जो case control, cross sectional, cohort, all of these are primary studies. ये किस तरह होती है? You go to the hospitals, you extract the data, आप उसमें physical properly involve होते हैं. Whereas the systematic review or meta analysis, you can sit in front of your computer just like I'm sitting now, or you guys are sitting in front of your mobiles. तो आप बैठ के स्टडीज को जो आपके रिसर्च टॉपिक के साथ रेलेवेंट है उसको आप गो थ्रू कर सकते हो. जब आप उसको गो थ्रू करोगे, यू विल लुक फॉर द एविडेंसेस, और आप अपना सिस्टमैटिक रिव्यू का एक किस्म का सपोर्ट सिस्टम है, वो सारी रिसर्चेस जो रेलेवेंट है आपकी रिसर्च के साथ, वो पास्ट में हुई है, तो आप उसको एज अ सपोर्ट सिस्टम कंसिडर करके अपने सिस्टमैटिक रिव्यू को, ठीक है, उसको you know, you can make that all of the knowledge related to your research topic up to date. उसको आप you know updated form में कर, ठीक है, in the form of systematic review. So that's why it forms the, you know, summit of evidence hierarchy के primary studies तो बहुत पीछे रह जाती हैं. Systematic review is a secondary study. It is study of studies. I have been talking about it, you know, from the start of our session. See के जो आपका ये इंडिविजुअल स्टडीज है सारी, these are the studies, और ये जो systematic study है, it is study of all of these studies. Now I guess you got it. And then you know, just it's like मैंने कहा कि ये इससे हमारे सर पे क्यों चढ़ा हुआ है? Why is it, you know, making the summit of the, you know, pyramid? क्योंकि जो evidences हम लोग conclude कर लेते हैं, you know, या concise कर लेते हैं, compact कर लेते हैं in our systematic view, वो सारे evidences they are used by all of the healthcare, you know, policy makers, just like World Health Organization या Cochrane Review लाइब्रेरी वाले, या जो भी उनकी हैंडबुक्स वगैरह जो कुछ भी होता है, ठीक है, उसके अंदर वो जितनी भी गाइडलाइंस बना रहे हैं, ठीक है, जितनी भी पब्लिक के लिए गाइडलाइंस वो इशू करते हैं कि wear a mask, you know, cover your sleeves well when there's a probability of getting a sunburn, or you know anything जो आपको as a precautionary measure दी जाती है, या as a just like एक drug proper आती है for the treatment of a specific disease. तो ये जो सारी policies बनती हैं, guidelines बनती हैं, they are, what do you think कि वो कहाँ से आ जाता है उनको? It's not like directly वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको नाजिल हो जाता है. ये all of these guidelines, they are, you know, based on the evidences that are present in that systematic review. जो particular diseases है, for example migraine headache की अगर मैं बात करी हूँ, तो उसके लिए जो proper एक हम medicine use कर रहे हैं, वो properly एक criteria के through उन्होंने identify किया, उसको select किया, then they said कि ये जो drug है, it is used for this particular, you know, purpose.
The second thing, while you are doing your systematic review, right? While you are going through all of these studies, right? So okay, ये जो individual studies थी, there might be a probability of biasness in it, ठीक है? For example, there might be confirmation bias, publication bias, selection bias, something bias. ठीक है? There are lots and lots of examples for the types of bias. ठीक है? So different types के bias exist कर सकते हैं in all of these different studies. ठीक है? So what we try to make sure while formulating our systematic review के इस biasness को हम कम करें, ठीक है? We make sure कि हम उसको reduce करें, because we are making it go through filters. हमें खुद notice में आ जाएगा कि यार ये एक ये evidence जो है, this is more stronger as compared to this one, या इनको publish नहीं करने दिया या something like that. कोई भी जो bias है उसको आप reduce कर देते हो. Secondly, I've talked about the secondary study, that it is a study of studies, right? Now, let's move on to the operation strategy for systematic review. Okay, so the operation strategy, that's basically, अगर आप लोग ये वाला part आराम से सुन लोगे ना सुकून से, जिंदगी में कभी systematic review में मसला नहीं आएगा, क्योंकि while I was preparing all of this topic, ठीक है ना, so I did not find this much cheesy peasy way of explaining the systematic review steps. आपको, I'm gonna just go away. Okay, so the point is, जो आपके operation strategy है, ये जो steps हैं, ठीक है, ये जिस तरह मैंने यहाँ पर किया हुआ ना, this is the most easiest and the digestible form of formulating your systematic review. So first of all, what you do when you want to formulate a system, you want to conduct your systematic review. सबसे पहले आपने question frame करना, आपने एक question, आपके जहन में एक query आ रही है, you want to answer that, and that's why your whole group of friends want to do research on this whole thing, right? So the question that you are formulating should be midway between, narrow and broad. So if your question is too narrow, अगर आप जो study करना चाह रहे हो वो बहुत narrow topic के ऊपर है, then what's going to happen that the knowledge जो उन individual studies में था knowledge, ठीक है, that might be too limited or that might be too restricted, या बहुत कम knowledge होगा and it will not be enough. वो इतना है ही नहीं कि वो आपके systematic review को support करे. So if your question was too broad, तो फिर तो flood of knowledge आ जाएगा यार. आप कहोगे कि यार भाई मैंने systematic review लिखना था, ये इतना जो पहाड़ इकट्ठा हो गया studies का, मैं इसको किस तरह से tackle करूंगा, ठीक है? So it will be difficult for you if your studies are too, if your the question or the just research जिस question को base बना के आप करना चाह रहे हो, अगर वो बहुत narrow है आपका question या बहुत broad है, and basically I'm talking about the studies that have been done in the past. Okay, so you can formulate your question. लोगों को question formulate करने में बड़ा मसला आता है. आपने जो अपना systematic review के लिए question formulate करना है, you can form it with the help of this criteria known as PICO criteria. Now what do I mean by P in it? P is a population, the population or the group of people that we're targeting in this systematic review. For example, I want to target a 40-year-old post-menopausal females in Valencia town. So this is a very specific और बहुत particular होकर मैंने एक population को target किया, ठीक है? And then I want to know the what is the I stand for intervention. So what is the intervention here? I want to study the effect of oral contraceptives here. Okay, and what is the condition if the females are taking the oral contraceptives? This is the comparison, or if they are on placebo. Like placebo होता है कि आप कोई हम आप ना देख रहे हो कि कोई मेडिकेशन पर चल रहा है या नहीं चल रहा. So this is the comparison here, ठीक है? And what is the outcome? I want to know if 40-year-old post-menopausal females of Valencia town who are taking oral contraceptives, if these oral contraceptives are leading to breast cancer in all of these females or not. So that's the ये मेरी query है, मैंने इसके ऊपर research करनी है. So that's how I have formulated my question. Now next thing, ये हमने question formulate कर लिया. Now next thing is we want to run a search strategy. Okay, so we can run a search strategy with the help of two resources. One is advanced resource और दूसरा आपका जो है that is the unconventional way. Advanced resource तो भाई जो आजकल हर कोई यूज कर रहा है, that's why we have named it as like conventional resource.
तो कल अरीबा ने बहुत क्रिटिकली, बहुत थॉरली पबमेड को एक्सप्लेन किया। उन्होंने उन्होंने सारा मेरा टाइम भी खाया कल पबमेड को एक्सप्लेन करते। सो आई डोंट थिंक सो दैट यू गाइस शुड हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट पबमेड. Now, I'm not going to explain anything regarding all of these, databases. जिससे आप data extract कर लेते हो, you just go to Google और आप आराम से इसको ना यहाँ से अपना जो भी आपने सर्च स्ट्रेटेजी, अपने आर्टिकल्स वगैरह सर्च करने हैं ना, वो आप आराम से पबमेड से, एमबेस से, साइकिन्फो से, कोक्रेन से कर सकते हो. इसके अलावा व्हाट इज द अनकन्वेंशनल रिसोर्स? ये तो है हमारे लाइक ना इंटरनेट की डीप डार्क वेब पर सब कुछ पड़ा हुआ है, बट अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं व्हाट आर दे? ग्रे लिटरेचर, द लिटरेचर दैट इज नॉट पब्लिश्ड. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ एक रिसर्च की, ठीक है, बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड समहाउ. देयर वाज मे बी सम पब्लिकेशन बायस और कोई भी अंदर कोई लैग आ गया, ठीक है, एंड वी वर नॉट एबल टू पब्लिश इट, ठीक है. तो दैट इज अ ग्रे लिटरेचर जो कि पब्लिश नहीं हुआ. इसके अलावा आप की एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर डूइंग इट ऑन द कार्डियोलॉजी, तो आप कोई बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से उसका एक्सपर्ट व्यू या ओपिनियन ले सकते हैं. Now, what's the third step in formulation of the systematic review? It is how you're gonna screen your studies. You're gonna do it with the help of two criteria. Number one is inclusion and exclusion criteria. Okay, so for example, I'm taking the population of 40-year-old males. सही है, तो मैं 10-year-olds को क्यों घास डालूं? मैं तो उनको साइड पे करूंगी ना, या मैं 30-year-old females को साइड पे करूंगी. No ladies first. Okay, here we're not talking about ladies, we're talking about males. So I'm just focusing the 40-year-old male population of, say, Engineerstown, right? So that's the inclusion and exclusion. हमें जो चीज नहीं चाहिए उसको हम एक्सक्लूड करें, ठीक है, हम उसको कोई घास नहीं डाल रहे. We are not giving it हलवा पूरी. Now the next thing is quality of studies. गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर आपकी स्टडीज, वो जो अभी इतनी बार मैंने स्लाइड दिखाई है इंडिविजुअल स्टडीज वाली, ठीक है, अगर आपकी ये स्टडीज ही अच्छी नहीं है, if अगर इसका जो मटेरियल है दैट इज नॉट गुड, ठीक है, उस पुअर क्वालिटी मटेरियल है, देन डू यू थिंक कि आपका ये जो सारा आप जो सपोर्ट सिस्टम बना रहे हो इन सारी इंडिविजुअल स्टडीज को, वो ही अगर गार्बेज है, यू थिंक कि आपका सिस्टमेटिक रिव्यू अप टू डेट होगा? नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी. Stop living in the world of imaginary stuff. नहीं होएगा, ठीक है. तो you need to make sure कि जब आपने स्टडीज को सिलेक्ट करना है, that is the reason why this is a systematic review. हम एक प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं स्टडीज को भी सिलेक्ट करने के लिए. That's it. Okay. So let's move on to the next step, that is data extraction. जब भी आपके सामने रिसर्च आती है, what do you think that the first thing that you do while a research paper is in front of you? You read the abstract, right? So you're going to screen all of the abstracts of all of the studies that you have selected, right? इसके बाद आप एक proper eligibility screening करते हो और you get all of the क्या नाम है data. किसके थ्रू आप कर सकते हो? मेंडले के थ्रू, रेफरेंस मैनेजर के थ्रू, ज़ोटेरो के थ्रू. अब ये किस तरह की साइट्स हैं कि मेंडले ऐसी साइट है जिसके ऊपर आप डिफरेंट, आपने अगर स्टडीज सिलेक्ट कर ली हुई है, उसको आप इट्स लाइक अ लाइब्रेरी, इट्स लाइक योर स्टडी रूम. वहां पे आप अपने फाइल्स इकट्ठी करते रहते हो. उसके बाद आप डुप्लीकेशन जो होता है उसको एलिमिनेट करते हो फैक्टर, ठीक है. इस तरह काफी फैक्टर्स होते हैं जो आप एलिमिनेट करते हो और आप सिर्फ उन स्टडीज को एक चंक में इकट्ठा कर लेते हो that are useful to you, जो आपको बेनिफिट देंगे, and you think that these are up to date and good enough, right? And we're gonna, अब हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो हमें डाटा चाहिए. फॉर एग्जांपल, मुझे बीटा ब्लॉकर्स का इफेक्ट चाहिए था ना, तो समझो मैंने डाटा अपना एक्सट्रैक्ट कर लिया. Now what I'm going to do is मैं उसको एनालाइज करूंगी and then I'm going to assess my data. And what I'm going to मैं क्या यूज करूंगी इसके लिए भी कुछ I have some tools with me. ये Newcastle Tower scale, this is world widely used. इसके अलावा Cochrane का ROB2 जो version है वो भी यूज होता है. Now अब मैंने एनालाइज भी कर लिया, अपने डाटा को एसेस भी कर लिया. Now but next thing that I'm going to do here is I'm going to report the findings. जो मैंने आउटकम्स इकट्ठी कर ली हैं उसको मैंने रिपोर्ट करना है, बट फॉलोइंग अ प्रॉपर पॉलिसी गाइडलाइन, मैंने रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है. और वो हम प्रिज्मा हैंडबुक से ले सकते हैं, कोक्रेन हैंडबुक से ले सकते हैं, ठीक है. और one thing that I forgot to mention in the importance of systematic reviews, इसके लिए आपको IRB अप्रूवल नहीं चाहिए, इसके लिए आपको किसी मेट्रो की जरूरत नहीं चाहिए. all you need to do is to register yourself. और वो कोविड के डेज में तो बहुत इजीली ले रहे थे. नाउ जैसे किसका नाम है कोक्रेन पर, बट वहाँ पर वो पोस्ट ग्रेड्स को लेते हैं, अंडर ग्रेड्स को नहीं लेते. तो इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है. उसके बाद आप अपना सारा ये कंडक्ट करवाते हो. फर्स्ट यू नीड टू फॉर्मुलेट योर क्वेश्चन और उसके बाद ये सारा क्राइटेरिया आता है.
Now, next thing, I have explained the difference between systematic review and literature review. Now, let's move to the meta-analysis. Now, सबसे पहले ना इसको समझने के लिए ये जो विक्टोरियन रिप्रेजेंटेशन है इसको देखें. लिटरेचर रिव्यू मैंने पहले भी कहा था इज एन ओशन, ओके, एंड सिस्टमैटिक रिव्यू इट इज एन आइलैंड ऑन दैट ओशन. अब उस आइलैंड के ऊपर अगर कोई सोसाइटी नो घर है, ठीक है, तो कोई बिल्डिंग्स हैं, कोई एक प्रॉपर सोसाइटी है, ठीक है, दैट इज मेटा एनालिसिस. So meta-analysis, it is the quantitative chunk of the systematic review, right? So this is the most easiest way of digesting what a meta-analysis is. Okay, so just like systematic review, अगर आपने मुझे सुना है तो वो secondary study थी, that was not a primary study. ठीक है, meta-analysis just like systematic review it is a secondary study. It is study of studies. ठीक है, because ये ना बहन है या छोटी बहन है, ठीक है, ये सिस्टमैटिक रिव्यू की छोटी बहन है, ठीक है. एंड सेकेंडरी स्टडी है. इसके अलावा व्हाट डू वी डू इन मेटा एनालिसिस, व्हाट इज आवर गोल इन इट, ठीक है, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट. मेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी आउटकम्स होते हैं, जस्ट लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट बीटा ब्लॉकर्स एंड माइग्रेन हेडेक्स, तो उसके जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हमने किए, ठीक है, उसके जितने भी आउटकम्स उन इंडिविजुअल स्टडीज में हमें मिले, सही है, उनको हम लोगों ने देखना है, ठीक है. we're gonna analyze it, we're gonna assess it, we're gonna look for the, ये ना आप साथ ही इसके स्टेप्स देख लो फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है. बट we're gonna do, हम इसको इसके जितने भी जितनी भी स्टडीज हमने सिलेक्ट की थी, हमने आइडेंटिफाई की थी, उनको हमने क्रिटिकली अप्रेज करना. व्हाट डू आई मीन बाय क्रिटिकली अप्रेज? दैट मींस आई एम गोना एनालाइज देम, ठीक है. अप्रेज इज नथिंग एल्स देन एनालाइजिंग समथिंग और असेसिंग समथिंग, ठीक है, फॉर योर ओन बेनिफिट. तो आपने उन सारी स्टडीज को उनके अंदर जितने भी कंपैरिजंस थे, उनके अंदर जितनी भी कंट्रोवर्सीज थी, ठीक है, यू ट्राइड योर बेस्ट टू रिजॉल्व देम, या फिर आपने आइडेंटिफाई किया उन कंपैरिजंस को. एंड वन the most important thing here is in meta analysis, मैंने पहले भी कहा है, it is a quantitative chunk of the systematic review. So this is meta analysis, it is a statistical approach, ठीक है. इसके अंदर हम मैथ्स को कुछ पार्ट्स लेकर चलते हैं, ठीक है. We are not talking about any theory here, we are only concerned with the data, ठीक है. हम स्टैट्स के साथ रिलेटेड है मेटा एनालिसिस में, ठीक है, हम उसके बारे में होंगे. आपने कंपैरिजन किया, आपने स्टैट्स के जितने भी आउटकम्स थे उनको आइडेंटिफाई किया, देन यू सेड के यार ये जो है ना, ये जो सारी स्टैट्स हैं, ये वाले जो आउटकम्स हैं, दिस इज आई एम गोना यूज देम. और वो सारे आपने जो डाटा है उनको कलेक्ट कर लिया, ठीक है. दिस इज चीजी बीजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेटा एनालिसिस है. ओके, सो देन आपने आपके जितने भी डिफरेंसेस आ रहे थे, ठीक है, उसके अंदर जितने भी कंट्रोवर्सीज थी उनको एक्सप्लोर किया, एंड देन यू हैव इन्फर्ड योर रिजल्ट. सो दिस इज व्हाट मेटा एनालिसिस है. तो ये आपने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स का आउटकम्स लिया, उनको आपने कंबाइन करके आपने इन्फर कर दिया. ओके, नाउ there is not always need of performing meta analysis. Some students they think कि meta analysis should always be there, आपको हमेशा meta analysis perform करना. No, meta analysis should not be performed when you are trying when you're forcing two things, just like arranged marriage, ठीक है. Two people are too different, they don't want to marry, ठीक है. उधर मुंह करके बैठा हुआ है और एक इधर मुंह करके बैठा हुआ है, they have so many controversies, they have so many conflicts, ठीक है, and the parents are forcing them to marry. Now this is what I would like to explain the whole term mixing apples with oranges. Apples don't want to sit with oranges, ठीक है, they might like mangoes more, whatever. Well, the point is when you're trying to mix apples with oranges, that is when you are dealing with broad mix of the studies, when the studies are too diverse, or when you are dealing with the flood of knowledge, the river of knowledge. So वो इतने ज़्यादा diversity आ जाती है कि you are not capable of performing meta analysis there. And I will tell you guys, just hold on, कि meta analysis आपको कब perform करना है, ठीक है. And when the second point is garbage in garbage out. जब आपकी जो studies आपने select की थी for to conduct your meta analysis, अगर उनमें ही बहुत ज्यादा बायसनेस थी, ठीक है, अगर उनके अंदर इस तरह के एविडेंसेस थे जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो they are giving you misleading, they are misleading you, they are giving you wrong indications, ठीक है. तो और अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो there is no need to perform meta analysis. And when you think and it is necessary to perform meta analysis when you are dealing with the stuff, when you're dealing with the studies that are sufficiently similar,
Okay, the studies they have one more thing I would like to add here. जो data उन studies के अंदर था तब तो बहुत ज़्यादा favorable है कि आप meta analysis conduct करवाओ, जब जो studies जिनके साथ आप tackle कर रहे थे, ठीक है, अगर उनका जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो उसी डाटा में है जिस तरह का डाटा आप यूज कर रहे हो. फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग डाटा फॉर एग्जांपल कि मैं सेंटीमीटर और सेकंड्स में अगर मैंने अपना डाटा रखा हुआ है ना, तो अगर कोई स्टडी मैंने सिलेक्ट की थी, ठीक है, अगर उसके अंदर भी डाटा सेंटीमीटर सेकंड्स के अंदर है, तो डेट इज मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर मी टू यूज दैट पर्टिकुलर स्टडी देन यूजिंग द अदर्स जिसमें डिफरेंट यूनिट्स यूज हुए हैं या डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डाटा यूज हुआ है. तो हम मेटा एनालिसिस तब ही परफॉर्म करते हैं जब आपका जो डाटा होता है या आपकी जो स्टडीज होती है ना, जो आप कलेक्ट करते हो, ठीक है, जो हमने प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो किया था स्टडीज को सिलेक्ट करने के लिए, तो अगर वो आपका सफिशिएंटली सिमिलर है. ओके, सो अब हम डाटा के ऊपर आ गए. हम मेटा एनालिसिस के अंदर इफेक्ट मेजर्स के साथ डील करते हैं. ओके, सो ये जो डाटा होता है, इट इज इन टू फॉर्म्स. इट इज आइदर बाइनरी डाटा or either it is a continuous setup. Now, binary के नाम से ही, just like I have Victorian representation, is the king here. 0, 1, yes, no, alive, dead, ठीक है, black, white, male, female. I'm not being racist here, but the point is कि अब इसको मैंने एग्जांपल भी दे दिया. इसके अंदर हमारी रिस्क इशू आती हैं, ओड्स इशू आती हैं, ठीक है, इनके लिए हम रेट्स वगैरह या स्टेटस वगैरह को डील कर रहे होते हैं. ठीक है, दिस इज योर बाइनरी डाटा, ठीक है, जिसमें दो ऑप्शन है हमारे पास. वी हैव टू कंट्रास्टिंग फीचर्स हियर. वेयर इन द कॉन्टिन्यूस डाटा आपका वो होता है दैट इज नेवर एंडिंग, ठीक है, दैट इज बाउंडलेस, दैट इज लिमिटलेस. फॉर एग्जांपल योर बीटिंग हार्ट, राइट, योर द ब्लड प्रेशर मेजर्स और द चेंजिंग होमियोस्टेसिस, राइट. So after homeostasis, do you think it stays on the normal? It stays on the average all the time? No, man, it doesn't. ये sway करता रहता है. It just keep on swaying from the normal, और उसको हम वापस लाते रहते हैं आपके जो positive और negative feedback mechanism होते हैं उसके थ्रू. ठीक है, so मैंने ये जो data है उसको example के साथ आपको explain करती हूँ. Now next thing is meta analysis का जो options हमारे पास है. So like we have, अगर हमारा जो डाटा डाइकोटमस और कॉन्टिन्यूस दोनों में हमारे पास अपना डाटा है ना, so we can perform the inverse various method here, जो बड़ा straightforward method होता है, ठीक है, and it is a general method. Whereas in if you're dealing with only dichotomous data, तो उसके अंदर we have two we have two criteria. एक mental Hansel default method होता है और एक Pareto method होता है. I guess there is no need to go into the detail of these the methods now. How meta-analysis, it makes the summit of evidence fire. Okay, so the point is, देखिए, एक group of students था, ठीक है, and what they wanted, जिस तरह मैं examples दे रही हूँ बार-बार कि बीटा ब्लॉकर्स का उन्होंने पता करना था जी माइग्रेन हेडेक्स पर, वो फॉर एग्जांपल गंगाराम हॉस्पिटल गए हैं, सही है. वहां पर अगर ये, अब मैं प्राइमरी स्टडी की बात करूँ, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस इस तरह मेटा एनालिसिस is making the summit, ठीक है. अब वो लोग गए वहां पर गंगाराम के अंदर, ठीक है, और कोई लैग आ गया ऑन द ऑन देयर पार्ट, स्टूडेंट्स के पार्ट पर, व्हाइल दे वर एक्सट्रैक्टिंग द डाटा, जब वो कलेक्ट कर रहे थे डाटा, तब कोई लैग आ गया, या फिर पेशेंट की तरफ से कोई लैग आ गया, उसने दवाई नहीं ली, ठीक है, या फिर जो अटेंडेंट है उसने एडमिनिस्टर नहीं की ड्रग. तो लैग आ सकता है डिफरेंट जगहों पर, एंड देयर कैन बी अ डिफिकल्टी कि वो जो आप रिजल्ट्स लेना चाह रहे हो, आप जो स्टैटिस्टिकल आउटकम्स लेना चाह रहे हो इन योर प्राइमरी स्टडी, वो आप नहीं ले सकते. So what is your survival here? What do you think? अब आपके पास क्या ऑप्शन रहेगी? भाई मैंने 2 महीने मेहनत करके मैं like I was working my ass out for this whole thing, and now I have nothing in my hands. I cannot infer my results. So what you're going to do here is आप क्या करोगे? आप जो पिछली आपकी individual studies थी, ठीक है, आप वहां से जितने भी, जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, आप उन सेकेंडरी स्टडीज को एज अ सपोर्ट सिस्टम बना के अपना वहां से आउटकम्स इकट्ठे करके आप मेटा एनालिसिस बना सकते हैं, आप सिस्टमैटिक रिव्यू बना सकते हैं. सो दैट्स द इंपॉर्टेंस हियर कि दिस मच लाइफ सेविंग टेक्निक और द थिंग इट इज दिस मेटा एनालिसिस. और इसमें जब आप आप डिफरेंट स्टडीज को गो थ्रू कर रहे हो, उसके अंदर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जजमेंट्स होती हैं. वी ऑल हैव डिफरेंट पॉइंट्स. एक दूसरे के सामने बैठ के पॉलिटिक्स को डिस्कस कर लो तो एक बंदे के इतने डाइवर्स ओपिनियंस होते हैं कि दे वांट टू किल द अदर पर्सन, आइदर इट बी देयर वाइफ, ठीक है. सो इतने ज्यादा डाइवर्स लोगों के ओपिनियंस और जजमेंट्स होती हैं. सो व्हाइल यू आर फॉर्मुलेटिंग योर मेटा एनालिसिस और व्हाइल यू आर फॉर्मुलेटिंग systematic review, I told you दोनों एक छोटी बहन है मेटा एनालिसिस और बड़ी बहन है सिस्टमैटिक रिव्यू.
So these are all kind of same things, right? तो जो जजमेंट्स होंगी या इंडिविजुअल स्टडीज के अंदर जो उसके अंदर बायसनेस आई थी वो आप इसके अंदर रिड्यूस अप कर देते हैं तो ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा. जस्ट सी दिस. Why is there need to perform meta analysis? We want कि हमारी स्टडी जो है वो एवेंजर्स बन जाए. ठीक है, इट बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग. ठीक है, इट बिकम्स जस्ट लाइक मतलब कि यू नो पावर ऑफ गर्ल्स, राइट? मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको उसके एविडेंसेस जो है वो रिच इन एविडेंसेस हो. ठीक है, एंड व्हाइल वी वर फॉर्मुलेटिंग आवर मेटा एनालिसिस मे बी हमारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के अंदर एक बहुत ही क्रिएटिव बच्चा था. एंड वाज लाइक यार ये तो एविडेंस है पहले से, आई थिंक कि ये भी हो सकता है. ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी है. तो मे बी यू एंड अप फॉर्मुलेटिंग अ न्यू हाइपोथेसिस या कोई कंफ्लिक्टिंग स्टडीज थी. ठीक है, उसकी आप जो कंट्रोवर्सीज थी उनको आप सेटल कर बैठे हो. ठीक है, व्हाइल फॉर्मुलेटिंग योर मेटा एनालिसिस या कोई डिफरेंसेस थे एंड नाउ यू नो यू हैव इंक्रीज्ड प्रिसीजन ऑफ योर एविडेंस. प्रिसीजन कोई चीज बहुत प्रिसाइज बिल्कुल एक्यूरेट लाइक दैट. ओके, तो I guess we have talked about the importance of meta-analysis. इसमें ये होता है कि we are basically dealing with the overgrowing body of knowledge. ठीक है, आपके बहुत ज्यादा जो randomized controls, epidemiological studies आपकी होती हैं केस कंट्रोल को, और ठीक है उसके अंदर जो डाटा ओवरग्रो कर रहा होता है ना, like flood that's coming out. ठीक है, तो उसको आप टैकल कर, ठीक है, मेटा एनालिसिस के थ्रू. एंड of course why is it considered as the gold standard? अब जितनी भी ये हेल्थ केयर, दिस इज द सेम थिंग, जितनी भी आपकी हेल्थ केयर यू नो गाइडलाइन पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, दे कंसीडर इट एज गोल्ड स्टैंडर्ड. क्योंकि देखिए सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर हम क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव कर रहे थे, बट जब आपने किसी चीज को एविडेंस देना होता है ना तो आप हमेशा फैक्ट्स स्टेट करते हो, और मेटा एनालिसिस में यू आर स्टेटिंग फैक्ट्स हियर, राइट? So that's the reason why it is considered as gold standard, and it is evidence-based medicine. I have stated it in the difference between literature review and systematic review. So before going towards the thank you very much slide, I would like to tell you guys एक animation है, because I was you know ये जो हमने सारा data वगैरह collect किया इसको हम represent किस तरह करते हैं graphically. We represent it with the help of you know forest plot. तो आपका forest plot होता है ना, उसके लिए मैं बहुत कपी हूँ. I was like, give up, Yasmin. You cannot do this. This is a havoc. This is mammothing task, right? So at the end, I found this animation and it helped me, and I hope this will help you guys as well. So here it is. Yeah. दिल लगा के खींचेगी थी, टाइम वेस्ट हो रहा है. हेड भी आएगा. I'm really sorry. Okay. Oh my God, my internet connection is unstable. I guess Yasmin ऐसा कीजिए कि if इसकी आवाज नहीं आ रही. हाँ इसकी आवाज नहीं आ रही. I guess you can share the link in the WhatsApp group. Yeah, sure. No problem. Okay. Jazakallah, that's all from my side, and thank you everyone for listening. Now I would like to handle it to Samin Goria. She is going to deliver her part. Thank you so much. Assalamualaikum. Just before Samin just start, I just want to mention everybody that हम लोग at the end of the session will have a little bit of your question answer session. I'll answer most of the questions. वैसे मैं chat में reply कर रहा हूँ to every single one of them, but some of them require a little bit of explanation. I'll do it in that. So don't leave at that time. Wait for my part, and then I'll explain. Otherwise, if there is काफी लंबा time हो जाता है. So ऐसा है कि tomorrow is my session. So I'll be answering your questions first, and then I'll be teaching you guys about statistics. Good luck, guys.
Good luck, Sameer. Okay, so okay, so it is Samin Gra from Fatima Jinnah Medical University. Here represent team 2, and today I'm supposed to present 2 topics. The first one with how to find a journal for publication. So first of all, I would like to ask that if I'm audible enough. Yes, you are audible. Okay, so I'll be going, can please give me a sec, I'm on it. Okay, so where is a, okay, so I'm starting in manuscript writing. What is manuscript writing? The questions which will be addressed in this session are gonna be what is manuscript writing, the purpose of manuscript writing, when to write a manuscript, and the parts of manuscript writing. Optional sections will also be discussed in this. So without wasting any time, I'm jumping onto the main part, which is manuscript. What is manuscript? So manuscript, in very simple words, I can say that it is a handwritten paper. So but what a handwritten paper is to do in our scientific society. So it has to do really nothing. Okay, we have to systemize it, we have to organize it. For that, we have to use 3 things in a product: the academia, the professional context, and the research organizations. Okay, so that amalgam, which will arise from the blend of all 3, will be known as the product of research, which will be leading to manuscript. It will be a publishable document. Of course, if something is not publishable, it will be of no use. It will be something like which will rest in the side drawer of your table, because it is of no use. You cannot tell anybody about things you have in your mind. You have to write them down in order to make it presentable, in order to communicate with your society. Then there is manuscript. I have told you that what manuscript is. Now, what's the purpose of writing a scientific manuscript and author's manuscript here? Of course, I'm concerned with the scientific domain. I'm concerned with the research domain. So I have to do that under the heading of scientific manuscript first. Second, the author's manuscript. What is author's manuscript? So basically, it is something in between the preprint and peer-reviewed publication. What is preprint and what is peer-reviewed publication? Yes, it sounds something monstrous, but it is not. It is really a simple thing. What is preprint? It is unreviewed. It is something a full draft. And what is peer-reviewed? Peer-reviewed is something which has been reviewed, as the name indicates. It is something reviewed by the peers. So which is in between those is known as author's manuscript. Then we had made a slideshow of that, of all these slides in an animated form, which was really amazing to present, but I'm sorry that I cannot. I will need a second from you for that. Okay, so it is the purpose of manuscript writing. What is the purpose of manuscript writing? It is something really, really important when you are concerned with scientific things. Okay, if you're not writing manuscript, if you have come up with some idea, but you are not presenting it to somebody, it is of no use. Of course, it is of no use because it is just in your head. To make it something useful, okay, to get some fruit out of it, we have to write it down. That's the purpose of writing manuscript. First of all, by writing something down, we organize all our ideas in something very sequenced form, in something that is rational, in something that is logical. Okay, and by writing that down, not only we get our ideas channelized, but we also get a mean to present our ideas to whole society. By presenting our ideas to the whole society, we give them a basis, a foundation of what? Building, a so-called building of what? Of whole research papers, of whole research domain based on my topic. Okay, if I'm getting a
topic in my head. I'm writing that down. I'm giving it to the society. This is the mean of providing them with a basis. This is the mean of providing them with a topic to make a whole building on that topic. Then when to write a manuscript? Yes. After thinking about writing a manuscript, I come up with the idea that when should I write the manuscript? It is a follow-up question. Right time to write a manuscript? Is it the summers, the winters, the spring, or the autumn? No, it is not like this. It is when you have enough data, okay? When you have enough tables, enough graphs, enough graphics, enough figures, you can write that down, okay? For to write a manuscript, you should have enough data. That is the thing. That is the headline about this. Now, the parts of manuscript. For this, you have to remember a mnemonic, which is I am Adi. Okay, it stands for Introduction, Methodology, Results, and Discussion. It's just like that DMAS rule, which you have to remember throughout your life. Now, I will be explaining all this in detail. Introduction. On the right side, you can see a template which is showing you an introduction of a research. It is, I guess, yes, it is conducted by Hasnaat Bai, who is the co-host or host of this session. So here is the introduction of that research. Now I'm explaining you that what introduction actually is. It is something to channelize into your research paper. Like it is to provide a proper background for your research to your reader, that he should know that what he's gonna read, that he should know what is being dawned onto him in the research paper he's gonna read. So the introduction will provide him with a proper background. Now the methodology. So the methodology is something, the explanation of what you have done and how you have done, okay? It is something, there are different methods for different studies. It is something really understandable thing. I'm giving you an example here. Like I was, just an example that I was concerned with conducting a research in the psychiatry department of Sir Gangaram Hospital. So there were 3 methods of doing that single research. First, to notice the verbal sessions of therapy between the patient and the therapist. Second, to analyze the drugs the patients were having. Third, to see if the patients were engaged in any physical activities or not. Okay, so by these, there are 3 different methods. I will be discussing with my readers that which method I had used while conducting my research. That's it. And in the right side, there is a template, an example from the same research paper of Hasnaat Bai, which is telling you about. You can read that. Then the points to be focused in methodology. What is this? Study settings, study designs. I'll be explaining this. Study settings. Study settings is something that the settings in which the study was conducted. The settings, the environment in which the study was being conducted. The study designs, the design of study. What was the design through which the study was conducted? Operational definitions. Okay. So something very like my research paper will not only be read by a layman. It will also be read by will not only be read by medical students. Okay, it will also be read by some layman. So how are they going to comprehend with what I have written in my research paper? So to make my study clear to them, to make my words clear to them, I'll be writing some operational definitions to make my words, my scientific terminologies easier for them. That will be called operational definitions. I'm giving you an example, a really, really basic example. So like I had used the word migraine. I know it is not that much a fictional word now, but still, I have written a word migraine, but some people will not be knowing the meaning of migraine. So I will write as half side headache. Okay, it will be making the part, it will be giving the meanings of migraine to a layman. This will function as an operational definition. It is something really basic, something I have made really easy for you. I don't know if is
it sounded something good or not. Then the sampling strategy, the study procedures, data management. This is something very understandable. If anybody needs any explanation on this, I can give. But now I will move on to the next slide, as there is a lot of things to be discussed. Results. Okay. The word results is something self-explanatory. Results tell us about the outcomes, what we have done, okay, in our common life and in our research. So it will be the briefest section of manuscript, and it will be telling you the study findings. Okay, here you can see on the right side that there is written that all the results are written in proper tables to make it easy for the readers, to make it easy for everybody to know that what was being concluded from the study. Okay. And yes, one hack for you to write the results is that please avoid repetition. It is really not appreciated in this part to repeat your things again and again. Then the discussion part. Okay, I had told everybody about results. Now what's the point of writing discussion? Are not they same? Of course they are not. Therefore I have written it separately. So results was something which told about the findings. Discussion is something which is the summary of what you have done. Okay, it will be something which is just summarizing your whole work, your whole research, you can say. Then in discussion, there's some things you have to keep in your mind, that what were the strengths and limitations of the study. Okay, strengths make sense. Limitations really doesn't make any sense. Why am I writing my limitations in my own study? Of course, it raises a question, but it is something which is really backing your research up. How it will keep your paper away from being rejected. How it will nullify all the objections onto your research by you yourself telling that what was the limitation you faced while writing your research. Okay, so I'm giving you an example here. I conducted the study in Sir Gangaram Hospital, psychiatry wards having 100 patients. Okay, that was my limitation, that I could use only 100 patients. My results could vary. My results can tell you something else. If the same study is being conducted on a population of 1,000 people. Okay, then another example. It can also vary from area to area. It was a very simple and basic example that we all have studied in the bio book, I guess, of FSS. There they have discussed rollers, tongue rollers, and non-rollers. They said that in English countries, the majority is non-rollers, while we were sitting in Pakistan and we practiced the same thing. And we concluded that we have more rollers than non-rollers. So that was a limitation based on area. I guess this is enough, that I have explained it enough. Then conclusions. Okay, some people write conclusions and like this on the right side. It has written discussion conclusions separately. This is the thing. Conclusions are sometimes written separately. And what are these? These are something take home message, something written, we can say that the most important point of whole research is written in this part. The people who are just reading the introduction and results and conclusion can say that your paper was enough to declare as good. Okay, so you should focus on your conclusion, that what you are writing in your conclusion. Then recommendations. Recommendations is something I'm recommending. Recommendations is something I'm recommending to my juniors, that how can they carry on my research. So it is about discussion. Now I'm going towards additional parts of manuscript. What are these? Abstract, summary, keywords, references. Yes, I'm just saying these names right now because I'm going to explain it right down here. Abstract. What is abstract? It is a summary. Summary of what? Of course, your research. A miniature manuscript. It is something which is same as
manuscript, but it will not include the graphs, the figures thing. Okay. You can see an example on the right side of our same co-author, I can say co-host, co-author of this paper. So here is written an abstract. I request everybody to look at this abstract, because I'm going to tell you something about this. Here we can say that it is written background, aims, methodology, results, conclusion, and keywords. Okay, it is quite evident. So what I'm going to tell you about this, it is an example of structured abstract. This is the thing I'm going to tell you. So should be taken. Okay, so it is an example of structured abstract. Then unstructured abstract. What is this? If I remove all these headings from this abstract and write it in the form of a I'm sorry, but I have to ask that if I'm audible enough. Anybody? Yes, Can Samin, anybody you're please audible. You're audible, Samin. Okay, actually I have the voice of Azan in my background and I was thinking about something. I'm going to continue with it. So if I remove all these headings from the abstract, then it will become an unstructured abstract. And the thing you have to keep in your mind is that it will have some word limits, 100 to 350. Okay, you have to complete your abstract in this word limit. And then they have written that it is the most commonly read part. Okay, what is this? By reading your abstract, a reader will finalize that if he is going to read your research paper actually or not. Okay, so you have to be very selective and very alert while writing your abstract, because it is going to determine the times how many times your research paper will be read by the reader. So you have to be very conscious about writing your abstract. Then we are going to describe, okay, so keywords. These are the measures. Measures are medical subject headings. In the yesterday session, Abira had described it enough, I guess, that what are measures. She had a good session with this thing. So I'm just jumping on to the next thing, which is references. What are references? Okay, so it is something, while writing my research, I obviously had used some data from papers of other authors. Okay, I obviously had used something which is not mine, my personally, which I couldn't own under my name. So if I write that without giving the references, the links of those people, we can say, of those papers, my research paper will lie under the category of plagiarism. Okay, so it will put a big question mark on my paper. I'm not allowing this to happen, because I had invested my time into that. Okay, so how can I let them red mark my paper just because I had given some references? No, I will not allow that. So for that, to make my things easier for me, I will give some references under my research paper by using some softwares. We can say this is just for overlays. These softwares are for overlays, that is EndNote, Mendeley, and some others. So I had not, I'm not giving you any video presentation on this. There is a reason. I'm going to tell you the reason. Because personally, when I attended that session in which the presenter was giving some reference, and I was just like, what? I cannot do it. Okay, I just gave up at that time, because I was thinking that this is just not my thing. I just cannot do it. But honestly speaking, when I did that with my own hands by opening my source, then literally it was really, really easier for me than to watch a tutorial at that time. Okay, so it gave me so much confidence at time, and I want you to be confident enough with this. Okay, I'm just giving you one hint that the software will guide you. I cannot guide you enough, because I can just make things messy for you, to be very honest.
But when you will open the software by yourself, the software will guide you to the end. You can do it. I trust in you, I believe in you, and this is really easy to do. So I'm leaving it up to you. So I'm going to the other thing, which is optional sections. Optional sections. So here is something like it should be written in bullet points, okay? And it is something like a really basic thing that it will tell the readers, it will tell the readers and everybody reading, you can say the medical community, the scientific community, that what was already known and what you are gonna add to the knowledge, okay? So really, it is like, it is really something evident that before you had conducted a study, it was not known. Okay, you are absolutely going to add something, and this portion will tell you them this. Then there is additional information. What is additional information? Really simple, really easy, something quite evident. You can read it with me if you want to. Title paper, cover letter, sorry, title page, cover letter, findings, conflicts, and a list. Then tips for clear writing. Now, I'm gonna share something with you that while I was preparing this presentation, I was skipping this. Like, it is really understood. It is self-explanatory. It is not even something we are supposed to tell people that what we are gonna write. Okay, what is this? I was thinking at this at that time, but I had a teammate, Ahmed. He told me at that time that you have to mention it. Why? Because our research papers get rejected just because we are not following these things, just because these things are being neglected. So you should be very evident about these things. You should be very conscious about writing these things. You should be very conscious about knowing these things. So this is something very important about this, which is being neglected by everybody. So here I'm gonna tell you that what is this. You should use simple, specific, and necessary words. Okay, there is no need of any unnecessary word. Then use consistent terminology, avoid synonyms. So this is something, avoid synonyms. In while writing literature, we are like, please, we try that we do not use the same word again and again. So we try to use the synonyms. So I am telling you that this is not the technique to be used in research community, in the research society, in the research domain. Okay, you are not supposed to write the synonyms of words. You can use the same word again and again if that is required, not unnecessarily. Then use inclusive and non-offensive language. Non-offensive language, of course, you have to use some non-offensive language because offense is not appreciated anywhere. Then avoid passive use and be okay, strength, length, and strength structure should be kept in mind. Now, scientific language editing. Okay, you have to, after writing your paper, you have to check the spell, you have to check the grammar, the sentence structure, and the punctuation. Okay, it will leave a really bad image that if you are doing grammatical mistakes. Being humans, we are allowed to do grammatical mistakes because we are humans. Okay, but because we are humans, we are also directed to use the grammar check. Okay, so that we remove all the grammatical mistakes and give our paper a good look, a good management, so that the readers may get, yes, it is worthy of reading. Then the 6S of scientific writing. Okay, the people having names with S should be alert. Of course, it is a cold humor. Don't take it any serious. 6S, that whatever you are writing should be simple, short, structured, sequential, strong, and specific. This is simple 6S you should use while writing, which will give some impact to your paper. Now, okay, so I'm done with my one topic. So I'm going on to the second topic, how to find a journal for publication. Okay. It is something
which is considered as really difficult and hectic, but it is not. It is really simple thing if we go with it in a simple way. Okay, we are in a habit of creating things difficult for ourselves, and while finding journal, we really think here we go and we stop our work like, sorry, I cannot do it. But this is not the thing. You can do it. How? I'm gonna tell you. So these are the outline with the things which I'm gonna discuss with you in this session. I'm not reading it right here because I'm gonna discuss it in detail with you people. Now the central induction policy. Okay, so you people should be alert about this. How? Because it is something of your knowledge, of your use. Everything I was telling was for your use, for your knowledge, but it is something you are going to grasp for your professional career. How? So what is central induction policy? Most of you have an idea about central induction policy, but for the people who do not have any idea about this, I'm going to tell it briefly to you people. So what is central induction policy? Okay, after doing your MBBS and when you're done with your house job, you are supposed to register, get yourself registered for FCPS, the specialization in Pakistan. This is basically for the people who are pursuing their career in Pakistan. So for that, you compete with people of your own province, of your own country. So while competing, you again have to run a race of aggregate of merit. So to make your merit a bit higher than the rest, you have this option of research papers. How? One research paper will give you 2.5 marks, and 2 research papers on a maximum can be included. So you will get 5 marks for your research papers in that aggregate, in that central induction policy, which may give you an edge to get selected for that FCPS seat. So here is some tips that you should know about these things. That something I'm going to discuss with you, that the journals in which your papers will be published should be recognized by HEC journal recognition system and at JCR impact factor journals. So what are these? I'm going to discuss. No worries. Okay, so the candidate is okay. So there is something DOI link. What is this? It is a link which is provided which is given to your research paper by the journal in the journal. Okay, if you have to submit your CV and you have to tell that you have written some research paper, you should provide this link with you. So that you should provide this link there, so that they know that you are not talking in air. There is some evidence with your research paper. So this link should be given there. And if it fails to open, your research paper is of no use. Then, okay. Then what is HEC Journal Recognition System? Okay, what is HEC? It is Higher Education Commission, as you all know. So the journals recognized by HEC are known as, you can say these are something, a branded thing. How? We can say that there are universities like my university who issue their who issues their own research paper, who issues their own journals. Okay, my university has a journal. King Edward has its own journal. Allama Iqbal Medical College has its own journal. DG Khan has its own journal, maybe. So if I get my paper published in my university, will it count? No, it will not. Why? Because HEC has put a barrier, has put a filter on the research papers by recognizing a few, some of the journals. So the journals which are being recognized by HEC are considered worth. This is considered as a brand. If your name is in that brand, you are considered worth, and vice versa. So after recognizing a few journals, HEC has categorized the journals into WXY category. And there is a 4th category, which is known as Z category. And that is for your university journals, which is not being discussed here because this is of no use, you can say. So we are here just discussing W, X, and Y category, the Y journals. What are these? And how are these journals are being categorized? This is the thing that we are concerned with.
So it is categorized on the basis of impact factor. The journals having highest impact factor is known as, is categorized in W category, and then similarly having average impact factor under X and having low impact factor under Y. Let me tell you one thing, for just for your you can say that for your use, that if you have option of these three journals, okay, but you cannot afford W or X journal, but you can afford Y journal, this is something you should avail. Okay, why? Even though it doesn't have any higher impact factor, but it is recognized by HEC, so it will give you 2.5 marks in your central induction policy. Okay, so you should go for it. Yes, journals are paid sometimes. Most of the time journals are paid, so you have to be very selective while choosing your journal. You have to check if you can afford that journal or not. Okay, being students, most of the cases we have to be very concerned about this thing, that if we really can afford or not. You should keep this in your mind. Then this is an example of W category journal, which is of course not of Pakistan, it is of United Kingdom, with a name named Nature Review of Thika. Then I want to tell you about impact factor first, but okay, we are going in a systematic way. Journal citation report. What is journal citation report? It is something which is given by Web of Science. It is a list of journals which are being recognized nationally, internationally. So if your name, if the journal you are going to get your research paper published is present, the journal is present in this list, that is, you can say, valid. You should go for that. So it gives this list, this journal citation reports come every year annually. It is as it is written that it is an annual publication, so it is given yearly. Then this is the thing I'm actually interested in telling you people. What is impact factor? Impact factor, it is something which we can say that the rating of what? Here I'm giving a lame example. You can say we categorize hotels: 5-star, 3-star, 2-star, 1-star. This is something like this. We rate our journals: high impact factor, lower, and average. It is something like this. It is just you can say, to make it a bit scientific, we have named it as impact factor. It is really something like those star thing. So what is impact factor? It is calculated by a really simple formula which you do not have to memorize. It is just written here to tell you that it is something derived mathematically, but it has nothing to do with you. Okay, so sites to, okay, what is written? Sites, what is this? Sites, it is number of citation of what? Okay, so when okay, when something behind me, sorry, I'm really sorry for this interruption, but I guess you people have go with it. Or should I mute my mic for some time? I'm really sorry for the inconvenience. It was not expected, of course. Khair. Cite. What is citation? So, okay, here I'm concerned with citation. So I have written a research paper. My sister, who is also working on some research project, has found my research paper valid enough to be cited in her paper. Okay, so she is going to give the reference of my research paper in her research paper. This is citation of my paper. Okay, so if my paper is good enough, not only my sister, her friends, my friends, some other people, some strangers, some readers will also give reference of my paper in their papers. This will be citation. The more number of citation, the more is the number of citation, the more we can say that the more
valid my paper is, we can say in that sense. Not actually, but I'm just giving an example. So why am I mentioning that here? It is cause citation divided by number of research paper published at that time in our journal. Like let me explain you. I guess I should explain it in Urdu. It will become easy. So एक research paper में कितने पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, एक जर्नल में कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए और उनमें से कितने को साइट किया गया. इट विल गिव यू अ इम्पैक्ट फैक्टर. हाउ? अगर आप उन्हें डिवाइड कर दें कि कितने रिसर्च पेपर्स साइट हुए डिवाइडेड बाय कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए, इससे आपको पता चलेगा कि उस जर्नल को कितना पढ़ा जा रहा है. जितना ज्यादा वो जर्नल पढ़ा जाता है उतनी ही ज्यादा ऑब्वियसली उसकी साइटेशन ज्यादा होगी. मैं आपको इसके ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि 10 पेपर्स साइट हुए, ठीक है, 10 पेपर्स पब्लिश हुए, जिसमें से 8 पेपर्स को बार बार साइटेशन की गई, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली क्योंकि 10 हैं उसमें से 8 का बार बार रेफरेंस दिया जा रहा है, जिससे ये होगा कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा बढ़ेगा. क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे नंबर ऑफ साइटेशन इंक्रीज कर रहा है, हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर जो है वो हमारा अभी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा, जिसकी वजह से कैटेगरी उसकी W, X और Y पे चली जाएगी. देन there is something approach 1 and approach 2. I wanna tell you this thing. Okay, approach 1. What is approach 1? You are supposed to find a journal. You will come up with 2 approaches. The first one is journal first. The second one is manuscript first. What are these things? Journal first. This is that download the list of journals and narrow down your research. Okay, let me tell you. आपने अब अपना रिसर्च पेपर लिखना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सोचते हो कि मुझे अपना गोल क्या सेट करना है. उस गोल को सेट करने के लिए आप पहले जर्नल ढूंढ लेते हो. पहले आप देखते हो कि यस दिस इज अ फैंसी वन, आप वो देख लेते हो, ये वाला जर्नल है, ठीक है. उसके बाद आप क्या करते हो, आप अपना गोल सेट कर चुके हो कि मुझे इसमें जाना है. उसके बाद आप क्या करते हो, आप उसमें जो ऑथर्स को गाइडलाइंस दी जाती है, जाहिर सी बात है गाइडलाइंस के बगैर कुछ भी नहीं होता, हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस. सो आप वो गाइडलाइंस को पढ़ते हो, फिर उस अप्रोच के साथ आप अपना रिसर्च, आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हो, ठीक है, और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर देते हो. इसमें एक हैक ये है कि जो रिसर्च पेपर का आप साइटेशन लिख रहे हो ना, मतलब जिस जर्नल में आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हो ना, उसमें आप ये करते हो कि उसके जो पहले से उस जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, आप कोशिश करते हो, यू ट्राई टू साइट देयर रिसर्च पेपर्स इन योर वर्क. ओके, बाय डूइंग दिस क्या होगा कि उनकी जो है वो impact factor increase करने के chances होंगे. So it will be a win-win situation for you and the journals. Okay, it will give you a chance so that your research paper will be published, and it will give a higher impact factor to the journals. So then the approach 2 is that you write your manuscript first. You say, okay, मेरे ज़हन में ये idea है, मैंने ये लिख लिया, मैं पहले ये लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं ये देखूंगा कि मुझे एक्चुअल में इसे कहाँ पब्लिश करवाना है. ओके, तो आप पहले अपना मैन्युस्क्रिप्ट लिख लेते हो. उसके बाद आप क्या करते हो, मैन्युस्क्रिप्ट, ऑब्वियसली फेज आ गया दैट यू हैव टू गेट योर मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश्ड समवेयर, of course in journals. So you start search for journals. You go for journals, you search a journal, and then the journal you like first you say that you look for the impact factor of that journal, and then there is one thing that I'm going to tell you a few moments later. You will select a journal, and then you read the guidelines, and then you align your already written manuscript according to those guidelines. You then again use that hack of citing their research papers in your work, and then you submit your manuscript. Okay, what I was going to tell you, that after selecting a journal based on the impact factor, you cross check your journal's name in either JCR list or in HEC recognized journals. You go and you open their links, their websites on the Google, which is very easy to do, and you check that if those journals are recognized by them or not.
if your study is going to waste, if your money is going to waste or not. Then journals find. Find your journals. I'm gonna add some reminders: Skimago, Chain, DOAG, and companies and publishers. What are these? These are not something monstrous. I'm going to tell you. Skimago is a journal. It is known as one. Okay. Of course, it is not the best one in a sense that everything has a drawback. It also has that. So what is that? I'm going to discuss that. First, I'm going to show you it. Okay, Skimago will give you a list based on impact factors from higher to lower. Okay, you will get a list of journals ranked from top to bottom. It is the best, but what is there are two, we can say basically there are three types of journals: open access, closed access, and hybrid. What are these? Okay, you can say that it is based on free or paid journals. So this software, this journal finder will not tell you about that. This journal will not tell you that which journal is free and which journal is paid. You have to copy the link of that journal here and to put in your Google software, and if so it is quite a task. To overcome that, you can say you use DOAJ. What is this? This is Directory of Open Access Journals. It will provide you with the journals which are free. So it is easier to know that you do not have to switch to some other software to know that if your journal is free or not. Okay. Then there is some other another journal finder which is named as Chain. Here they have it is some an example you can see over here. Okay, here they have written that open access, the orange highlighted, it is open access, and I think I was discussing with you a few moments before. Okay, so this is but I have not the publishers. These are publishers. Their names are, their logos are shown to you people, so that I'm not going into details of this, but I'm going to tell you that Wolters Kluwer, Sage, BMC, and Elsevier, these are something international publishers, you can say. Okay, so Wolters Kluwer is, I guess, publisher for Lippincott. So this is something like I'm just telling you that these are some publishers. Okay, so this is a thank you speech. I'm going to start that, but before that, I'm going to tell you something that this is a tip you can say from my side to you people, that when you're going to find a journal for your publication, you should be conscious about one thing, that if that journal is backed up by some you can groups or not, by somebody or not, because when your journal is backed by some publisher, you can say that whatever, it will become cheaper for you. When it will become cheaper for you to use, for you to get your research published, it will create an ease for you. Okay, it will not cost that you. Can you? I'm gonna tell you something we have not. Can you listen to me? Yes. Your audio yes. is too much distorted. I don't know why, but your audio is too much distorted. You're not able to listen. Okay. Since when? Okay, अभी thank you speech में आपका आवाज बहुत ज़्यादा अटकी. I don't know, but your audio video was lagging. You can sum it up your speech. No issue. Okay, so I if I'm audible enough for 1 or 2 lines, I can continue. Yeah, you can. Sure. No issue. Okay, I was just about to give some tips, but I guess my connection is not supporting me enough for that. So I'm gonna just thanks my teammates, which are Ahmed, Qasim, and Liaquat. They have really helped me a lot with this.
Nath by Yasmin Apid have all helped me a lot with this. So I'm really sorry that I can't give you those tips based on my network issues. I will try to convey it whenever I will get enough time. And it is, if anybody has any question, if they had gotten anything from my presentation, you can say, they can ask any questions if their minds are up to some questions. Okay, Samin, I'll be with you. अगर किसी को कुछ questions वगैरह हैं तो ऐसा है कि I'll be answering those questions, ठीक है? And ये है कि start में काफ़ी ज़्यादा questions आए, तो I'm not sure कि मैंने जिन को बोला है कि आप लोग questions जो है ना अपनी pinch कर लो, तो can you just type the same question, I can answer those questions again. काफ़ी ज़्यादा questions I guess. Okay. So first of all, I don't know where to start because there are a lot. मैंने कोशिश बहुत की थी कि I answer most of them. So, am I audible? Just type the message that if I'm audible to you guys or not. आप लोग मुझे बता दो ना ताकि audible हो, ताकि I don't want to मैं बोलता जाऊँ और आप लोगों को सुनाई ना दे. Sumin, are you there? I guess she's gone. आप Sumin kindly आप ना वो slide on कर दो. Because there's a few questions that I want to answer those. I guess she's gone. I don't know if she's gone or not. I guess she's gone. उसका internet का connection का issue है. Okay. So काफ़ी ज़्यादा questions हैं. First of all, आपका data analysis का जो part है वो I'll be discussing it by tomorrow. ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी issue है data analysis का, I'll make it fun and I'll make it fun looking. तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना. कल का बहुत आसान होगा and it will be very fun loving and it will be more like practicing. और आप लोगों के मैं ऑनलाइन ही क्वेश्चन आंसर मैं साथ आप लोगों को सिखा भी दूंगा और साथ मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशंस को भी रिस्पॉन्ड करूंगा. ठीक है, तो एक तो ये बात होगी. सेकेंडली ये है कि कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चंस थे कि हाउ टू अप्रोच टूवर्ड्स द मेंटोर. आई गेस मैंने कुछ रीड किया था इस तरह का क्वेश्चन है, तो वो भी आई विल डिस्कस इन टुमारो सेशन एज वेल. And I'll be discussing this in final session as well, जो कि हमारा शरियार भाई और मिनाम भाई के साथ है. They are from final year, so वो उनके साथ हमारा आखिरी सेशन होगा, तो I'll be discussing that. Okay. Coming to the rest of the questions, आप लोग चैट में पिंच कर दो मुझे दोबारा questions अगर कुछ हैं तो I'll answer those again. अब्दुल्ला ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे. I'm not sure कि if I have answered all of them or not. Yes, session is recorded and it will be uploaded as well. तो अगर किसी को कोई issue है तो वो solve हो जाएगा. Coming to the next part. बच्चे sample size, somebody asked Aisha that sample size और systematic review का क्या ताल्लुक है आपस में. Systematic review का sample size का कोई ताल्लुक नहीं है. Sample size is different and systematic review is different. ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन आया था स्टार्ट में. I'm coming back from the Yasmin part. Systematic review is a crux of individual studies and in meta-analysis is the crux of systematic reviews. For example, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ, एक छोटी सी example लूँगा, then I'll be jumping on to the next part. Systematic review ये बात show करता है. For example, there are thousands of the studies that are being done on, for example, take it like I worked on hepatitis. So, for example, hepatitis पे काम करते हैं, बात करते हैं. So there are thousands of the studies that has been done, individual studies जो कि हुई हैं वो hepatitis. ठीक है. Coming to the part आप systematic review लिखना चाहते हो. अब आपके question का है कि effectiveness of या side effects of interferon जो पहले इंजेक्शन लगा करते थे उसके side effects of interferon for the age of 25 से 45 male among कराचीट्स या अमंग इन लाहौर. ठीक है, तो जब आप ये एक सिस्टमैटिक रिव्यू लिखते हो तो आप उसमें मेल आपने एज भी मेंशन कर दिया. दुनिया में जितनी भी स्टडीज हुई हैं जो 25 से 45 से बियॉन्ड हैं वो आपका गार्बेज में चले जाए. समबडी आस्क्ड मी क्वेश्चन कि गार्बेज कैसे होता है, आप कैसे गार्बेज को फाइंड आउट करते हो. तो जो स्टडीज आपके क्वेश्चन से एसोसिएट नहीं है यू विल फॉरगेट दैट. कैसे? 25 से 45 के दरमियान जो भी स्टडीज होंगी दे विल बी परफेक्ट, और जिनमें मेल्स होंगे एज सब्जेक्ट वो परफेक्ट. क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि साइड इफेक्ट्स ऑफ इंटरफेरॉन ऑन द 25 to 45 years मेल पेशेंट्स इन हेपेटाइटिस इन लाहौर.
अब जो स्टडीज़ लाहौर से बाहर की हुई हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी, जो स्टडीज़ फीमेल पे हुई हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी, जो स्टडीज़ 20 से पहले या 45 के बाद होंगी वो भी रिमूव हो जाएंगी, एंड जो हेपेटाइटिस की स्टडीज़ नहीं है वो भी रिमूव हो जाएंगी। तो आपके पास एक करेक्ट रह जाएगा, आप उसको सम अप करोगे, यू विल ब्लेंड देम ऑल इन द जूसर ब्लेंडर, और आप उसके बाद अपना रिजल्ट्स निकालोगे, यू विल राइट दैट। फिर अगर आपने उसमें से भी पोर्शन निकाला तो आप उसका भी एक चंक का पोर्शन निकालोगे, एंड दैट इज मेटा एनालिसिस, जब आप फैक्ट्स डिस्क्राइब करते हो। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू the concentrated solution of the concentrated part of the whole studies is the meta-analysis. The more diluted is systematic analysis, and the more diluted is individual studies. तो मैंने आप लोगों को गार्बेज भी बता दिया, और मैंने वहाँ पे मैसेज किया था इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। सो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये होता है कि जिसमें आप चीज़ों को इंक्लूड करते हो और जिसमें आप चीज़ों को एक्सक्लूड करते हो। पॉइंट इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में क्या है। फॉर एग्जांपल मैं इसी स्टडी को लेके जाता हूँ, द साइड इफेक्ट्स ऑफ इंटरफेरॉन इंजेक्शंस, जो कि पुराने ज़माने में लगा करते थे, द साइड इफेक्ट्स ऑफ इंटरफेरॉन इंजेक्शंस ऑन हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स इन लाहौर विद एज 25 to 45। ये आप सब लोग इस इंक्लूजन क्राइटेरिया दे रहे हो। इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या कि किन किन लोगों को आपने इंक्लूड करना है। एग्जाम्पल 25 से 45 के दरमियान, ये एक इंक्लूजन हो गया। लाहौर के स्टूडेंट्स हो गए, लाहौर के पेशेंट्स हो गए, ये इंक्लूजन हो गया। मेल पेशेंट्स हो गए, ये इंक्लूजन हो गया। उसके बाद हेपेटाइटिस के पेशेंट हो गए, ये एक इंक्लूजन हो गया। अब एक्सक्लूजन क्या है, फीमेल सारे एक्सक्लूड हो गए, अबव 40 बिलो 20 एक्सक्लूड हो गए। दिस इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ओके, can we do the systematic review on undergrad level and this is require some kind of qualification? No, not at all. You can do it on your own level, but you just need to have some mentor with yourself. So agar aapko koi mentor milta hai to you can do that. Or somebody texted me among yourself that they were unable to find some mentor, so I'll be pinching them with some good persons. aap logon ko main link karwa sakta hu, no issues. I'll be talking about that part of that, and I'll just be the person taking the questions. Okay, so can we do, okay, मैंने आंसर कर दिया उसका। where we, अच्छा, मोहम्मद, I don't know, then I can't, I'm not sure who's the name, what's the name, मोहम्मद समन नाम है, I don't know वो मोहम्मद के बाद आगे क्या है। where we can get the unpublished researches. Unpublished research are actually called grey literature. अब आप लोगों को अगर किसी को इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरेस्ट है, या अगर आप में से किसी ने थीसिस करना है, अगर आप में से किसी को आइडिया हो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो यू प्रोबेबली नो कि हर 50 साल बाद जो उनका CIA है, जो उनका FBI है, वो एक कुछ आर्टिकल्स रिलीज करता है जो कि उनकी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हैं। द पॉइंट इज कि वो जो आर्टिकल्स रिलीज होते हैं दे आर अनपब्लिश्ड, ठीक है, लेकिन वो रिलीज हो जाते हैं, वो आपको डार्क वेब पे मिलते हैं, वो आपको लोकल गूगल पे मिल जाते हैं, तो वो ग्रे लिटरेचर है। ग्रे लिटरेचर इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज अनपब्लिश्ड। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सर्वे किया है, BBC इंग्लिश वालों ने कोई सर्वे किया एंड दे डिड नॉट रिपोर्टेड फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, वी अंडरस्टैंड एग्जांपल्स वेरी मच। ओके, एग्जांपल ये है कि BBC उर्दू ने लाहौर थर में जाकर कुछ लोगों की प्यास के बारे में बताया कि हाउ मनी पीपल आर डाइंग ऑफ द हंगर एंड थर्स्ट। दैट इज द रिपोर्ट दैट इज बीइंग गिवन आउट बाय द BBC उर्दू, बट इट इज नॉट इन आवर साइंटिफिक मेडिकल लिटरेचर। You can use that report as a fact कि ये ग्रे लिटरेचर है, ठीक है। तो ये ग्रे लिटरेचर होता है जो कि पब्लिश नहीं होता साइंटिफिक जर्नल। दैट्स इट। I read somewhere that you have published few, no, आपका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका कोई ओरिजिनल स्टडी हो फिर आप सिस्टमेटिक रिव्यू कर सकते हो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल that do systematic review first, then रूटीन स्टडीज बाद में, तो लोग करते हैं, नो इश्यूज। द प्रॉब्लम कम्स, मैंने आपको जहाँ से आइडिया हुआ है उसामा, आई एम जस्ट टैगिंग यू हियर, आपको जहाँ से आइडिया हुआ है, द पॉइंट इज ये वहाँ तब होता है जब आप फर्स्ट ऑथर लेने की कोशिश करते हो। जब आप फर्स्ट ऑथर लेने की कोशिश करते हो तो प्रॉब्लम वहीं से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पीपल डू नॉट एक्सेप्टेड कि फर्स्ट ऑथरशिप किसी स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, तो वो रिजेक्ट कर देते। So try to do with some mentor, and then once you have some 2 to 3 research papers, then you can do it. I have done 8, so no issues. मैं आराम से कर लेता हूँ. It's very good for me. Okay, registration के बारे में थोड़ा बता दें. Like मैंने वो बता दिया आपको. Prospero, JBI, I'll discuss tomorrow as well. Then statistics analysis is required in systematic review. Yeah, a little bit of that I'll be teaching you guys tomorrow with that. For that, garbage मैंने आपको कर दिया.
what is the basic difference of systematic review and meta-analysis? Done. I have asked results. मैंने बता दिया. If somebody has have done the systematic review on a topic, can we perform meta-analysis on the exact? I would not recommend that, but I would say you can do it. Share the link to the video. Okay, done. Can you explain the continuous? ये मैं आपको मोहम्मद इजहान I'll explain tomorrow क्योंकि continuous type of measure effect मैं आपको कल टाइप करके दिखाऊंगा जब आपको रिसर्च एग्जांपल के साथ समझाऊंगा. अभी थोड़ा टाइम लंबा हो जाएगा. I don't want to saturate you guys with a lot of. I'm coming down. Is there any minimum number of studies included in systematic review? No, you can. आप कोशिश करो कि you can gather as much as you can to find out the to find out the exact literature that you're looking forward to with your study. ठीक है? Okay, give me a second यार. Give me a second. रुक जाए. Okay, when to mention index journal? अच्छा, index journal वो होते हैं कि जो किसी जगह पे साइट हुए होते हैं या किसी जगह पे इंडेक्स होते हैं. इसमें कोई जरूरी नहीं कि वो पबमेड वाले ही हों. देयर आर लॉट ऑफ इंडेक्स जर्नल. HEC के इंडेक्स जर्नल है. देयर आर लॉट ऑफ जर्नल्स. तो इंडेक्स जर्नल का कोई खास वो नहीं है कि आप सिर्फ पबमेड वाले जर्नल्स को इंडेक्स जर्नल कहोगे. दे आर नॉट. दैट्स इट. yes, questionnaire design will be discussed by tomorrow. मैं क्वेश्चन में स्टार्ट ही इस चीज़ से करूँगा ताकि आप लोग क्वेश्चनर अच्छा डिज़ाइन करो, ताकि आप लोगों के आंसर्स अच्छे आएँ, ताकि आप लोग एनालिसिस अच्छा कर सको. द प्रॉब्लम व्हाट लाइज हियर इज, ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं. हमारे क्वेश्चंस जो है ना वो अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसके बाद उनसे एनालिसिस नहीं होता है. So I would recommend you to attend my lecture tomorrow. I'll help you out how to get a good questionnaire. To जितना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चनर होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट है. Is the manuscript the same as synopsis? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Synopsis is the first part. Proposal जो आप synopsis and proposal they are both same. ठीक है? तो synopsis और proposal को आपने एक तरह का लेना. Somebody used to say proposal, some says synopsis. Synopsis लेते हो, synopsis में मैक्सिमम वही पार्ट होता है जो कि मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट. ठीक है? सॉरी, मैन्युस्क्रिप्ट में वही पार्ट होता है जो कि synopsis का पार्ट. I'll discuss it at the end of this part क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है. Yes, manuscript is not a beginning of anything. बाकी मैंने आंसर कर दिया. Okay, you can always reach out to me. My number is there in your WhatsApp groups. So his name is Mohammad Hasnat. And I'm the head of department of this whole webinar. So आप लोगों को नंबर मिल जाएगा. If you ask any of the member of my number, you can get it. But I'll share my email as well tomorrow. I mostly reply on email. तो मैं आप लोगों को email से reply कर दूँगा. लेकिन अगर आप WhatsApp use कर सकते हो, no issue. What are citation? What is difference between references? अच्छा यार, ये छोटी सी बात सुन लो. सब लोग ना confuse हो जाते हैं citation में, reference में और bibliography में. So bibliography क्या होता है? आप लोगों के पास अगर if I let me get a book. Give me a second. I show you something. आप लोगों को दिखाऊंगा ना तब आपको समझ आएगा. देखो, it's just I'm showing you something random thing. आप लोगों के गाइडन के एंड पे ये जो कुछ पार्ट लिखा होता है ना, ये जो कुछ पार्ट लिखा होता है, ये वाला, ये जो एंड पे लिखा होता है, ये होता है बिब्लियोग्राफी. आप कोई भी रिसर्च करते हो, उसके एंड पे जब आप रेफरेंस देते हो तो वो उस पैटर्न को रेफरेंसिंग कहते हैं, लेकिन जो आप अंदर डालते हो वो बिब्लियोग्राफी. गेटिंग इट? रेफरेंसिंग इज द पार्ट दैट इज रेफरेंसिंग इज द हेडिंग. मतलब आप समझ आएंगे हेडिंग का मतलब क्या है कि हेडिंग होती है, उसके नीचे आप बिब्लियोग्राफी ऐड करते हो और इस पूरे प्रोसेस को साइट करना कहते हैं. गेटिंग इट? साइटेशन इज अ होल प्रोसेस. रेफरेंसिंग इज दी आप उस मतलब आप रेफरेंस दे रहे हो कि भाई यहाँ से आर्टिकल लाया हूँ. ठीक है? और उस आर्टिकल का पूरी डिटेल शेयर करना, उसे बिब्लियोग्राफी. तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दी. ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज आई विल बी डिस्कसिंग विद नूर फातिमा कि आप लोग ना अपना रिसर्च पब्लिश करा सकते हो अंडर ग्रेड लेवल पे. मैंने अपनी पहली रिसर्च फर्स्ट ईयर में करवाई थी. सो कॉल्ड इफ आई टेक्निकली से मैंने अपनी पहली रिसर्च FSC में की थी. FSC सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में. तो आप कर सकते हो इफ़ यू आर एबल टू डू दैट. आप लोग कर सकते हो, नो इश्यूज, इसमें कोई मसला नहीं. इट्स माई 5th ईयर इन रिसर्च, तो it's very easy for me. लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है. That is why I plan a whole session at the end of this tomorrow session. संडे वाले दिन एक्सपर्ट्स के साथ हमारी इसी तरह बातचीत होगी. कोई लेक्चर वेक्चर नहीं होना. आप लोग लाइव आओगे, अगर आना चाहते हो, अगर आप चैट करना चाहते हो आप चैट करोगे. तो इसी तरह का सेशन होगा. And we will be answering your main questions, जो कि इस तरह के लाइक
रिसर्च कैसे की जाए, किस बंदे को ढूंढा जाए, किस बंदे को काबू किया जाए, किससे रब्ता किया जाए, किसको पिंच किया जाए, तो ये आई डिस्कस, ठीक है। ओके ओके, इन टेक्स्ट साइटेशन लिटरेचर रिव्यू में पैराग्राफ, ओके आप किसी ने रिप्लाई किया, मैंने PICO आपको बता दिया, चेक इट आउट दी सी पार्ट, आपको समझ आ जाएगी। हाउ कैन वी गेट आवर रिसर्च पब्लिश्ड, हाँ आप लोगों में से किसी ने, ये इरम सलीम ने हैंड रेज किया था, इन्होंने क्वेश्चन भी रेज किया कि व्हाट इज दी, कि आप लोग CIP क्या, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में कुछ उन्होंने मैगजीन्स बताए कि जो कि HEC से वेरीफाइड है। जब हमारा ये NLE से पार्ट, जो पहले हमारा ये जो मेडिकल एसोसिएशन आई है हमारी, इन्होंने लाजिम कर दिया था कि CIP के थ्रू, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के थ्रू हम लोग इंडक्ट करेंगे। अब लोग ये करते थे उससे पहले कि पीपल गेट देयर रिसर्च पब्लिश इन एवरीवेयर, जहाँ पे भी चाहते हैं वो कहीं पे भी पब्लिश करवा लेते थे, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि फिर इन्होंने कहा कि सिर्फ HEC से वेरीफाइड जर्नल्स जो होंगे, अगर आप उनमें रिसर्च पब्लिश करवाते हो, देयर यू गेट 5 मार्क्स, ठीक है। तो आप लोगों को बात सुनने में आई है वो ये है कि अगर आप HEC से जो वेरीफाइड जर्नल्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ जर्नल्स जो कि बाहर के हैं, मैंने इंटरनेशनल स्टडीज की हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिकेशन करवाई है, देयर आर लॉट ऑफ जर्नल्स जो कि बाहर हैं, जो HEC से वेरीफाइड हैं, अगर आप उनमें पब्लिश करवाओगे तो HEC आपको मार्क्स देगी। लेकिन इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, फॉर एग्जांपल इन माय केस आई वांट टू गो फॉर USA, तो आप कर सकते हो, देयर इज नो बाउंड्री फॉर दैट। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि अब उन्होंने CIP के थ्रू उन्होंने बता दिया कि HEC से वेरीफाइड जर्नल्स होंगे तो आपको FCPS में 5 नंबर मिलेंगे अगर आपके 2 जर्नल, 2.5 मार्क्स फॉर 1 जर्नल, 2.5 मार्क्स फॉर 2 जर्नल, मिला के आप करोगे तो इट्स 5 मार्क्स, ओके। तो HEC से वेरीफाइड जर्नल होने चाहिए। तो HEC से वेरीफाइड जर्नल्स की लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड की है, यू कैन ऑलवेज लुक अप फॉर दैट ऑन द वेबसाइट। तो ये वो वाली बात। और मार्क्स की बात यह है कि वो आपको FCPS में मार्क्स मिलेंगे, कोई और वाले मार्क्स की बात नहीं है, ओके। आप कभी भी फाइंड कर सकते हो, मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ कि मैंने किस जर्नल में टारगेट करना है, क्योंकि आपने जिस जर्नल में टारगेट करना होता है ना अपना रिसर्च पेपर, ये अब्दुल्ला का क्वेश्चन है, आपने जिस क्वेश्चन जर्नल में रिसर्च पेपर टारगेट करना होता है, आपको वहां से अपने मुतल्लिक जो लिटरेचर रिव्यू के आर्टिकल्स हैं वो भी मिल जाते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। यस, यू कैन चेक योर इम्पैक्ट फैक्टर फ्री, HEC की वेरीफाइड वेबसाइट पे मिला हुआ सब thing is available there, you can search it out for there, okay. Yes, we need permission from authors for citing their papers. अब ये बहुत टेक्निकली बात है, कुछ पेपर्स होते हैं जो कि अलाउड नहीं होते, ठीक है, जिनको आपको मिलता ही नहीं है, आपको लाइक फॉर एग्जांपल उनको आपको एक्सेस नहीं मिलता, तो आप उनको ईमेल करते हो, दे गिव यू एन एक्सेस ऑफ देयर रिसर्च पेपर, तो आप उसको साइट कर सकते हो। साइट आप किसी का भी पेपर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी का जर्नल, किसी को आपको आर्टिकल चाहिए लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा, तो यू कैन टाइप दैट ईमेल टू दैट स्पेसिफिक पर्सन, जिसका जो लीड ऑथर होता है, जो फर्स्ट ऑथर पे होता है, आप उसे टाइप कर सकते हो ईमेल, एंड दे कैन गिव यू एन एक्सेस टू देयर पेपर, और आप उसके पेपर को साइट कर सकते हो। साइटेशन के लिए आपको कोई उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गिव द रेफरेंस एंड दैट्स इट, ओके। कमिंग टू द ओके, अब आ गए जो न्यू क्वेश्चन, what is the ideal size of the sample and so it does not get too small or too big? Alishba Wasim, आप sample size calculator पे जाते हो, there are a lot of sample size calculator, WHO sample size calculator, उसका एक फार्मूला होता है, आप उसमें अपने population variance डालते हो। I know it must be going above your head, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि आप सैम्पल साइज कैलकुलेटर जो है वो अगर आप फाइंड आउट करो तो आपको उसमें अपनी वैल्यूज डालोगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज बताते हैं कि आपका सैंपल, आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से आपका सैंपल, जितना बड़ा आपकी पॉपुलेशन होती जाएगी आपका सैंपल उतना बड़ा होता जाएगा। हाँ, एक्सक्लूजन और गार्बेज सेम थिंग्स नहीं, या ऑब्वियसली एक्सक्लूजन जो है वो आपको गार्बेजिंग, आप गार्बेज को बड़ा रॉन्ग टर्म में ले रहे हो। एक्सक्लूजन आपको हेल्प आउट करता है कि आपने किन आर्टिकल्स को रिमूव करना है लिटरेचर रिव्यू में और किन आर्टिकल्स को आपने एक्सेप्ट करना है। इससे मैंने आपको बताया कि इफ साइड इफेक्ट्स ऑफ इंटरफेरॉन इंजेक्शंस ऑन हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स अमंग लाहौर मेल एंड 20 to 40 ईयर्स, अब 40 ईयर्स से ऊपर जिन पेशेंट्स के ऊपर आपको केस रिपोर्ट्स मिलेंगी आप रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि यू आर नॉट एक्चुअली डीलिंग विद दैट, सो दैट इज द गार्बेजिंग पार्ट, क्योंकि आपके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ने उसको निकाल दिया, दैट्स इट, ठीक है।
ओके, आपको सेंड कर दीजिए टू रिसर्च पब्लिकेशन स्पेसिफिक जर्नल विल बी व्हाट नो या एरियम सलीम, आपको बताया मैंने कि एचईसी से जो वेरीफाइड जर्नल्स होंगे उनको आपको मार्क्स मिलेंगे इफ यू वांट टू परस्यू एज एफसीपीएस पार्ट। मैन्युस्क्रिप्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट सेम होता है, इज नॉट इट प्लेजियरिज्म, नो नो नो, मैं बताता हूँ मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। Manuscript and abstract is like manuscript is the whole document and abstract is as मैं आपको बुक से एग्जांपल देता हूँ। हमारी बुक्स ना एक्चुअली साइटेड पेपर्स होते हैं जो आपको आइडिया नहीं होता। गिव मी सम देखो, मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। आई जस्ट ओपन अ रैंडम बुक, ठीक है, गिव मी सम टाइम। ओके, तो देखो ये ना एक फोर्थ ईयर की बुक है, ठीक है। आप लोगों के गाइडन में भी लिखा होता है फ्रंट पे कि उन्होंने कुछ पैराग्राफ दिए होते हैं, स्टार्ट में आउटलाइन दी होती है, इनमें थोड़ा थोड़ा उन्होंने लिखा होता है, फिर उन्होंने उसके बाद पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है। द पॉइंट इज कि जो आउटलाइन वाला पोर्शन होता है ना, जो पूरे चैप्टर को एक ग्लैंस देता है, वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। और जो पूरा नीचे चैप्टर होता है वो होता है आपका पूरा मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट में ईच एंड एवरीथिंग होती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में बहुत कम चीजें होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट में दो लाइनों का इंट्रोडक्शन होता है, 3 से 4 2 लाइनों का मेथोडोलॉजी होती है, 3 to 5 लाइंस का आपका कंक्लूजन होता है और 1 लाइन की कीवर्ड्स होते हैं। तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। कि अगर कोई रैंडम बंदा आए, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, उसको मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एंड ही मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू टेक अप टू राइट एंड पब्लिश एन आर्टिकल? For me, I can write in a 2 weeks and 3 weeks. I can do that. It is very possible for me क्योंकि आप ऐसा होता है कि I have very good mentor. My mentor is Dr. Ahmed from my college. He is very good in that. He helps me out in every part. तो वो मेरे लिए बहुत आसान कर देते हैं। मैं 3 से 4 हफ्ते में, अगर आपके पास टीम अच्छी है, आपकी टीम अच्छी है, आपके रिव्यू, आप if you are doing, आप अकेले रिसर्च पेपर करना स्टार्ट करोगे, you will get stuck. You need to have some good team members, some good inspirational members जो कि काम करना जानते हैं और जो काम करना चाहते हैं, ठीक है। 4 से 5 बंदे रखो। अगर आपकी टीम बहुत अच्छी है तो you will get that into in within मुझे याद पड़ता है, I started my project in May, ठीक है, and at the end of the April and in May, और now आज कुछ दिनों पहले मैंने उसका मैन्युस्क्रिप्ट जमा किया। तो आपको खुद ही आइडिया हो गया होगा मैंने कितने दिनों में किया। दैट्स फॉर मी। लेकिन एक अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2-2 साल चलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन स्टडी, इट डिपेंड्स अपॉन द टीम, इट डिपेंड्स अपॉन द मोटिवेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द डिसिप्लिन दैट यू गाइस शो इनटू दैट। ये होता है। Is there any difference between paper and research article? Obviously, I'll try to use less words, so I will say paper, but originally it's a research article. ठीक है। I think it should be called final manuscript instead of just manuscript. Yeah, you can. No, ऐसा होता है कि manuscript बार-बार review में आता है। एक बंदा उसे review करता है, उसमें से गलतियां निकालता है, फिर उसमें से review निकालता है, उस manuscript से गलतियां निकालता है। तो at the end जब 3-4 review हो जाते हैं, तो आपके manuscript में जो गलतियां निकल जाती हैं, उन end पे final manuscript हो जाता है, जो कि आपका best होता है। Can we reference article only after reading their manuscript or we have to study for test? देखो अब्दुल्ला, आप रेफरेंस कर सकते हो आर्टिकल्स को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट्स को रीड कर लो। फुल टेक्स्ट को आप रीड तब करना चाहिए जब आपने मेथोडोलॉजी फाइंड आउट करनी हो, जब आपने उनमें से कुछ क्वेश्चनर्स निकालने हो। फॉर एग्जांपल आगा खान ने एक डिप्रेशन का, मेरी एक स्टडी थी डिप्रेशन के ऊपर, मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डिप्रेशन के ऊपर, फर्स्ट ईयर में मैंने की थी। तो मुझे क्वेश्चनर चाहिए था, तो आई हैड टू रीड आउट द आर्टिकल। लेकिन जहाँ पे मुझे सिर्फ ये चाहिए, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि कोविड के ऊपर जो आई डिड सम रिसर्च इन कोविड, तो उसमें मुझे सिर्फ नंबर्स चाहिए थे, तो मुझे वो एब्स्ट्रैक्ट में मिल गए थे। तो एब्स्ट्रैक्ट वर्क फॉर मी परफेक्टली, नो इश्यू, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। कैन वी परफॉर्म मेटा सिस्टमैटिक एंड रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ओनली फॉर 2 to 3 स्टडीज? आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू दैट। आप कहते हैं, आई वुड रिकमेंड यू टू यूज सम, देखो आप किस चीज के ऊपर कर रहे हो ना, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रेयर सिंड्रोम है जो कि वेरी रेयर है दुनिया में, उसके 3-4 केस ही होंगे, तो वो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई बहुत कॉमन है जैसा हेपेटाइटिस है, तो वो तो बहुत ज़्यादा होगा, तो वो तो आपको भी उतना ही करना पड़ेगा ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल देखें, जिस तरह सब अब मोस्टली आप लोगों में से फर्स्ट ईयर में से बहुत कम होंगे, सेकंड ईयर जिन्होंने कर ली होगी, थर्ड ईयर होंगे, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे मेरी बात को। इस तरह सब एपिड्यूरल
जो ना हेमरेज है फॉर एग्जांपल, तो दे आर डिफरेंट केसेस। कुछ ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अब एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, एक केस। टुडे आई गेट टू नो अबाउट दैट, ठीक है, कि अगर किसी को रीनल सेल कार्सिनोमा है, किसी को किडनीज के ऊपर एक कैंसर है, किडनी का कैंसर है, तो सम ऑफ द पेशेंट डू प्रेजेंट विद वर्टिगो। वर्टिगो मतलब घूमता है, उनका सर घूमता है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि देयर आर वेरी लेस पेशेंट्स रिपोर्टेड विद दैट सिम्टम। तो अगर आप रिसर्च करना चाहो तो यू कैन फाइंड आउट दैट क्लिनिकल केस रिपोर्ट्स, आप उनको मर्ज करो और आप उनको काम कर सकते हो। तो पॉइंट इज कि डिपेंड्स के अपॉन कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो। अगर आप बहुत रेयर टॉपिक पे बात कर रहे हो, जैसे टाकासायो सिंड्रोम है या कोई भी रेयर सिंड्रोम है, तो वो तो फिर आपको बहुत कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई जनरलाइज स्टडी करना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड के यूज एज मच एज ऑफ द आर्टिकल, क्योंकि कोविड के ऊपर लोगों ने लिखे हैं, सिस्टमैटिक रिव्यूज लिखे हैं, दे यूज अ लॉट ऑफ स्टडीज। Can a meta-analysis be done on observational study like cross-sectional study, or is it limited to just clinical trials? You can, I'm not many, literally, if I say that meta-analysis, I have never, been the part of meta-analysis, because I really avoid that. मैं आपको reason बताता हूँ why I avoid meta-analysis, because original studies का ज़्यादा, impact जाता है अगले बंदे के ऊपर rather than systematic review and meta-analysis. लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप घर बैठे meta-analysis तो sorry सिस्टमैटिक रिव्यू तो कर ही सकते हो। मेटा एनालिसिस इज लिटिल बिट ट्रिकी पार्ट, वो आपको लिखने के लिए ना आपको 3-4 बंदे चाहिए होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं। आई वुड रिकमेंड यू के टू हिंज या पिंच समबडी हु इज वेरी गुड इन मेटा एनालिसिस, तो आप उससे करो। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स भी कर सकते हो, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में नहीं, क्लिनिकल स्टडीज या क्लिनिकल बेसिस पे। क्योंकि आप जब क्लिनिकल ट्रायल का वर्ड बोलते हो तो आप बोलते हो कि कोई मेडिसिन है जो कि ट्रायल पीरियड में चल रही है, दैट इज नॉट इवन बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज एक्सेप्टेड एज एज अ मेडिसिन इन जनरल फार्मा, या मेडिसिन की बुक में नहीं आई, तो वो तो क्लिनिकल ट्रायल है। केस रिपोर्ट्स के ऊपर आप मेटा एनालिसिस कर सकते हो, सिस्टमैटिक रिव्यू कर सकते हो। आई गेस मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन सब लोगों के रिप्लाई किए। कल के सेशन में विल बी डिस्कसिंग अबाउट सिस्टमैटिक स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिसिस। स्टार्ट हम करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन से। आई विल बी टीचिंग अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ 2-3 स्लाइड्स होंगी हार्डली, जो स्लाइड वाला काम है। देन बाकी सारा फन पार्ट है जो कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर से दिखाना है कि हमने कैसे करना है। प्रॉब्लम इज नॉट कि आप सॉफ्टवेयर से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, द प्रॉब्लम इज कि जब आप उससे वैल्यूज से इंटरप्रेट कर पाओगे या नहीं कर, दैट इज वेयर आई विल हेल्प यू। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पूरा एक डिटेल सेशन दिया था सिस्टमैटिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, बट प्रॉब्लम वहाँ पे आई कि पीपल वर एबल टू डू दैट, बट पीपल वर नॉट एबल टू इंटरप्रेट द वैल्यूज, उसका मतलब क्या है। एक मैथमेटिकल वैल्यूज से मतलब निकालना वो थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो आई विल बी आंसरिंग दैट पार्ट मेनली, क्योंकि ये एडवांस है थोड़ा सा, तो मैं बेसिक्स हल्का हल्का टच करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आई विल बी आंसरिंग यू ऑल ऑफ दैट पार्ट इन योर क्वेश्चन सेशन। किसी को कोई क्वेरी वगैरह हो, डू लेट मी नो। आई एम देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल, माय टीम मेंबर्स आर देयर इन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। यू कैन ऑलवेज पिंज अस, एंड आप हमें पेज कर सकते हो, हमें बता सकते हो कोई इशू है। अगर आप लोग कोई टीम बनानी है तो डिस्कस। आप लोग रेस्ट करो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू टुमारो, गुड लक।